Hello my dear student. So in previous class we have already solved some numerical on the basic of law of conservation of linear momentum, and in this class also we will solve two or more numerical on the basic of law of conservation of linear momentum. Then we will start a new important concept, that is apparent weight of men inside the lift. So before I start this new concept, first we solve some numerical on the basic of law of conservation of linear momentum. So this is your first question, and this type of question you have already solved in previous class. So this is your first question, and you know that if you solve any numerical on the related with the law of conservation of linear momentum, then you first draw a rough diagram on that basic of question. So according to this question, a bullet of mass 25 gram, and we know that the mass of bullet is considered as small m, and this is 25 gram. So this is 25 into 10 to the power minus 3 kg, because the physical quantity is always expressed in SI system if you solve any numerical. So the mass of bullet small m is a 25 into 10 minus 3 kg, is horizontally fired with a velocity of 500 meter per second from a rifle. Suppose this is a rifle or gun. From this gun we fire a bullet which has mass 25 into 10 to the power minus 3 kg, and after the firing the velocity of the bullet is small v, which is equal to 500 meter per second. Now car to firing karucho from a rifle of mass 5 kg. That means the rifle or gun which have mass, and we know that, or we consider that the mass of rifle is capital M, and which is 5 kg. So what is the recoil velocity of the rifle? That means when we firing, then after the firing the rifle is moves backward direction, and with that velocity the rifle is moves towards the backward direction, that is recoil velocity. So I directly put the formula of recoil velocity, that is the recoil velocity of the rifle or gun is equal to minus the mass of bullet into the velocity of bullet divided by capital M is the mass of the gun. So all of the data is given in your question. So you can easily find the recoil velocity of the rifle. So V is equal to minus M 25 into 10 to the power minus 3 into velocity 500 meter per second divided by mass is 5 kg, mass of the rifle, capital M. So this will be cancelled. The real cancel karo. This is 100. So velocity, equal velocity of gun is 100. That means 10 square. 10 square. 10 minus 3. That means minus 25 into 10 to the power minus 1. So if you solve, this will be 10. So this will be 5 5 jar 25, 5 2 jar 10. This will be minus 5 by 2. That will be equal to 2.5 minus 2.5 meter per second. And here this minus sign signifies that the velocity of the rifle is backward direction. Velocity of rifle is backward direction. हम जैसे बोले तो हमारा rifle रू बुलेट को फायरिंग करबो, velocity of bullet is small v, which is
फॉरवर्ड डायरेक्शन फायरिंग करबा परे बुलेट आगु पळेबा किंतु तमर गन टा पछाड़ के आसबा सो दिस माइनस साइन सिग्निफाइज the recoil velocity of the gun is moves towards backward direction. So this is your first question. This type of question you also solved in previous class. So I directly put the formula and find the answer of the recoil velocity of the gun. Then another question. Another question. Two hockey players of opposite team while try to hit hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has a mass of 60 kg. One has a mass of 60 kg and mass moving with velocity and watch moving with velocity 5.0 meter per second, while other has mass of 55 kg, and was moving faster with velocity and was moving faster with velocity 6 meter per second. 2 hours. The first player was the first player. In which direction and with what velocity? In which direction and what velocity will they move after the entangle? Will they move after they entangle? The force assume frictional force is 0. So this is your question, and as for this question, two hockey players. First you can be
try to draw a rough diagram, then you easily solve this type of question. So two hockey players of opposite team while track a hit hockey ball. दुटा प्लेयर जेते बेले तुम बॉल को ट्राई करूछन हिट करबा पे हॉकी बॉल को ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटांगेज तापर हिट कला समय देखो सपोज एटा होचे बॉल एटा होचे फर्स्ट हॉकी प्लेयर एटा करो सेकंड हॉकी प्लेयर ई दुटा का ट्राई करूछन ई माने तांकर स्टिक द्वारा ई बॉल के हिट करबा काजे ट्राई करूछन चला लगा दै छै अब जेते बेले माने ट्राई करबे दुटा पाके आसबा के बाद बिकॉज़ बॉल रो पाके आसले तो से माने हिट कर पाबे आ दुटा जेते बेले पाके आसबे से कंडीशन का हम कहू एंटांगल मींस से दुटा पाके पळे आसबे गुटे सहित पूरा मिसी की हिट करबे बॉल को सो लगा दै छै वन हैज ए मास ऑफ 60 kg तो तमे तो जानि दुटा बॉडी थिबा दुटा हॉकी प्लेयर हो कि जे भी हो दुटा बॉडी थिबा तो फर्स्ट मास हमें m1 धरना और सेकंड बॉडी रो मास के m2 धरना so according to this question given data is mass of first hockey player suppose m1 is equal to one has mass of 60 kg mass of one hockey player is 60 kg and लगा दै and was moving with velocity 5 meter per second तार माने तार मास 60 kg फर्स्ट प्लेयर रो मास तमा 60 kg और से केते वेलोसिटी रे मूव करबा हम जानि तो फर्स्ट कंडीशन तो से रीजन में हम u1 लिखली बिकॉज़ फर्स्ट प्लेयर रो वेलोसिटी और मास 1 हबा फर्स्ट प्लेयर रो मास m1 फर्स्ट हॉकी प्लेयर रो वेलोसिटी u1 केते 5 मीटर पर सेकंड काजी एतकी वेलोसिटी रे बॉल आके मूव करबा जा द्वारा कि बॉल को से हिट करबा एतकी वेलोसिटी रे मूव करबा सेकंड ई प्लेयर जदि ई डायरेक्शन में मूव कला बॉल आके प्ले कंपलसरी ई प्लेयर ता हॉकी प्लेयर और फर्स्ट हॉकी प्लेयर आके मूव करबा तार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करबा बॉल आके मूव करबा बुझो छी बहुत प्रैक्टिकली तमे भाबो जदि बॉल अछि जदि गुटे हॉकी प्लेयर जदि ई आके मूव करबो जदि बॉल के स्ट्राइक बाय हिट करबा के चाहबा बोले सेकंड प्लेयर भी तो मूव करबा के पड़बा बॉल आके तो से फर्स्ट प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करबा क्वेश्चन से जिनिसटा लिखा जाइए देखो while the other mass 55 kg तार माने सेकंड हॉकी प्लेयर रो मास होची 55 kg दैट इज m2 और लिखा भी जाइए was moving faster with velocity 6 meter per second towards first hockey player तार माने फर्स्ट हॉकी प्लेयर आके से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रे मूव करूची दैट मींस से बॉल आके मूव करूची किंतु हॉकी बॉल आके जेते बेले मूव करूचे से फर्स्ट हॉकी प्लेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूची केते वेलोसिटी द्वारा 6 मीटर पर सेकंड अब जेतु एटा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करबा सो दिस इज कंसीडर्ड एज -6 मीटर पर सेकंड देखा आउथरे कोइ दोचे दिस इज ए हॉकी बॉल and this is two player hockey stick this is another player having or hold hockey stick and these two player move towards the hockey ball to hit so this player moving with velocity 5 meter per second towards the hockey ball similarly this second player move with the velocity 6 meter per second towards the hockey ball क्लियरली बुझलो कोन पे मूव करबे हॉकी बॉल को हिट करबा पे सो देखो ई प्लेयर जदी हॉकी बॉल को ई डायरेक्शन में मूव करबा the second player ता हॉकी बॉल को तार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करबा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट प्लेयर आके जाउचे सेकंड प्लेयर ता तो फर्स्ट प्लेयर आके जेहेतु सेकंड प्लेयर ता जाउचे तार वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड किंतु जेहेतु डायरेक्शन ता चेंज होला सो वी कैन यूज माइनस साइन because first player रो वेलोसिटी ई डायरेक्शन में रहउछ पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सेकंड प्लेयर ता अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूछ हॉकी बॉल आके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करले ही से हॉकी बॉल को हिट कर पारबा तो सेकंड प्लेयर रो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड नो डाउट किंतु अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूछ सो आई यूज माइनस साइन because velocity is a vector quantity हां देन क्वेश्चन को जे देखो in which direction and what velocity will they move after they entangle that means ई दुईटा में जते बेले मूव करूछन बॉल आके
किछ समय वाला पर ई दुईटा हॉकी प्लेयर कौन करबे एंटांगल हेबे। एंटांगल मींस मिसी जिबे। ई बॉल के हिट करबा पई दुईटा एंटांगल हेबा मिसी जिबे। एंटांगल हेबा मिसी जिबे। सो एंटांगल हला परे ई दुईटा केन डायरेक्शन में मूव करबे। जे ई फर्स्ट हॉकी प्लेयर डायरेक्शन में मूव करबे ई दुईटा कि सेकंड हॉकी प्लेयर डायरेक्शन में ई दुईटा मूव करबे। डायरेक्शन बाहर करबो तार संगे संगे एंटांगल हला परे फाइनल वेलोसिटी केते हेबा सेडा भी बाहर करबो। तो मन रखिबो एंटांगल हला पर ई दुईटा लोग कॉमन वेलोसिटी द्वारा मूव करबे। तार माने फर्स्ट हॉकी प्लेयर रो वेलोसिटी जरो v1 फाइनल वेलोसिटी एंटांगल हला पर तार फाइनल वेलोसिटी v1 काजे देखो बॉल को हिट करबा पूर्वरु ई दुईटा लोग वेलोसिटी u1 और u2 थिला इनिशियल वेलोसिटी किंतु सेतेबेले जेतेबेले से माने हिट करबा पई एंटांगल हेबा मिसी गला पर तार फाइनल वेलोसिटी इटाटा भी v धरो एज्यूम करो आ इटा फाइनल वेलोसिटी भी v एज्यूम करो किंतु तुम प्लस माइनस यूज नहीं करो बिकॉज़ तुम एंटांगल वाला पर केन डायरेक्शन में मूव करबे से जिनिस का हमें देखना तार संगे संगे तार फाइनल वेलोसिटी भी बाहर करबे। किंतु मन रखिथिबो एंटांगल हेबा परे ई दुईटा कॉमन वेलोसिटी रे ही मूव करबे। जेतेबेले से माने परस्पर बॉल को हिट करबा पई पाको आसबे सेतेबेले एंटांगल हेला परे से माने एंटांगल मींस कोलाइड हेला परे कोलाइड बा मिसी वाला पर से माने गुटे कॉमन वेलोसिटी रे मूव करबे। फर्स्ट प्लेयर रो फाइनल वेलोसिटी एंटांगल परे जेते सेकंड प्लेयर रो फाइनल वेलोसिटी भी एंटांगल परे सेते आइनो फोर्स एज्यूम करबा 0 तार माने इने तमे m1 u1 m2 u2 जानिछ आ तम के फाइनल वेलोसिटी v पाइबा अछि। फाइनल वेलोसिटी v पाइबा अछि। मैं खाली लेट नीचे जे जेहेतु एंटांगल हला पर दुटा कॉमन वेलोसिटी रे मूव करबे सो फर्स्ट हॉकी प्लेयर रो फाइनल वेलोसिटी भी v हेबा v1 भी v हेबा और सेकंड हॉकी प्लेयर रो फाइनल वेलोसिटी भी v हेबा। खाली कॉमन निया जाई छी किंतु फाइनल वेलोसिटी रो वैल्यू तम बाहर करबो लेखा जाई छी in which direction and what velocity will they move after the entangle। entangle होला पर से माने केन डायरेक्शन और केन वेलोसिटी रे मूव करबे। जदि ई फाइनल वेलोसिटी जदि पॉजिटिव रे बाहरीबा तले फर्स्ट हॉकी प्लेयर रो डायरेक्शन में मूव करबे। आ फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव रे बाहरीबा तले सेकंड हॉकी प्लेयर रो डायरेक्शन से माने एंटांगल होला पर मूव करबे। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दम। गिवन डाटा तो इने लिखि देली सो अप्लाई सो तमे क्वेश्चन लिखि क्वेश्चन ई टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करो बारंबार कहूछ तमे रफ डायग्राम बने लिखि क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाबो। सो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट इनिशियल momentum is equal to initial momentum is equal to final momentum. So what is the initial momentum? What is the total initial momentum of two hockey player? First hockey player initial momentum m1 u1 and second hockey player initial momentum m2 u2. Hello? Before they hit the ball, their initial momentum is m1 u1 plus m2 u2. Then when they are entangled, then after entangle, their final velocity is common velocity vv. So first player of final momentum is m1 v plus second player of final momentum is m2 v. Because entangle hala pore bhi takar mass m1 m2 thiba hi thiba. किंतु ताको फाइनल वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी रे मूव करबे एंटांगल हला परे से दुई जन मिसी कर मूव करबे तापर। तो फर्स्ट होता है m1 भी है सेकंड होता है m2 भी है। हम ये v रो वैल्यू दरकार सो इस साइड के मैं आगे ले पूछे देखो तो v के कॉमन वैल्यू रहबा केते m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सो v वैल्यू आराम से बाहर जीवा तमे वैल्यू पुट करबो किछि नै ना सब कर वैल्यू तो जानि छ तमे m1 u1 m2 u2 m1 प्लस m2 आराम से बाहर कर दो। So v is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2. This type of question also you have solved in previous class. So v is equal to m1 60 kg into u1 5 plus m2
55 kg into u2 -6 -8 का यूज कली बुझल क्वेश्चन रे प्लस दिथिला किंतु जेहेतु से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करछ जदी फर्स्ट प्लेयर जदी बॉल आर के डायरेक्शन में मूव करबा सेकंड प्लेयर बॉल्स को हिट करबा पई फर्स्ट प्लेयर रो डायरेक्शन में मूव करबा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूचे सेति पई ने तमे माइनस साइन यूज कलो मने रखिथिबो डायरेक्शन को कंसीडर करबा को बाध्य न्यूमेरिकली बिकॉज़ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय m1 plus m2 m1 plus m2 m1 plus m2 that is 60 plus 55 so you solve then final velocity is something if the final velocity is with positive value then positive value देखिए मूव करूचे फर्स्ट प्लेयर तो एंटांगल होला पर फर्स्ट प्लेयर रो डायरेक्शन में दुईटा जाक मूव करबे जदि if the final velocity of two hockey player is negative the negative direction में के मूव करूचे सेकंड प्लेयर तो सेकंड प्लेयर रो डायरेक्शन में दुईटा एंटांगल होला पर मूव करबे सो जेन डायरेक्शन तमर पॉजिटिव आबा में पॉजिटिव डायरेक्शन में जे मूव करूचे फर्स्ट प्लेयर मूव करूचे तो फर्स्ट प्लेयर सब मूव करबे और नेगेटिव डायरेक्शन में सेकंड प्लेयर मूव करूचे तो फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव रे बारीबा प्लस सेकंड प्लेयर डायरेक्शन में दुईटा जाक एंटांगल होला पर मूव करबे सो दिस इज द क्वेश्चन सो फाइनल वेलोसिटी बाहर कर दो लगभग डायरेक्शन तो एंटांगल होला पर दुईटा कॉमन वेलोसिटी मूव करू दन सेटा जदी बुझि नै पाबा बोले गला बाकी क्वेश्चन सो तमरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रो क्वेश्चन थिला एबा हम देखमा अपारेंट वेट apparent weight of man in lift so first time के बुझवा पड़बा what is the meaning of weight so मने रखिथिबो जे weight is the force of reaction of the surface contact in our body तार माने देखो suppose this is a surface and in this surface we standing on this surface ऊपर हमें standing हिचो ठिया होइछो so जदी surface जदी न थांता तो हमें का करते तो हमें तल को पड़ी जाई थांतो we have freely falling with our mass m and due to gravitational force g so mg force द्वारा हमें तल को पड़ी जाई थांतो किंतु due to presence of this surface we press our force mg on the surface so we know that according to Newton's third law if we exert action on the surface this surface also exert with us reaction equal and opposite reaction तार माने this reaction of the surface is said to be weight because we feel that if there is a surface then we feel that we have some weight but in absence of surface we feel that we have weightless because suppose if we jump from a building top of the building then during our fall करवा समय रे we feel we have weightless तार माने देखो हमें जेकोसी ऊपर जदी हमें फ्रीली फॉलिंग करबा तले फॉलिंग करबा जंप करबा समय रे हमको केमती लागिबो वेटलेस लागिबो किंतु जेतु ई सरफेस रे हमें अछु सरफेस रे असु तो ई सरफेस रो रिएक्शन पाई हमें फील करूछु दैट वी हैव सम वेट so in absence of surface contact we can't feel that we have weight that means in absence of surface contact we already feel that we have weightless तार माने जदी सरफेस कांटेक्ट न थिबो हम जदी फ्रीली फॉलिंग करिबा जे कोनोसी जगह रो जदी हम फ्रीली फॉलिंग करिबा ले हमर वेट न थिलांती आइबो क्लियरली बुझलो सो वेट केते बेले थिबांती लागबो जेते बेले हमें गुटे सरफेस सहित कांटेक्ट रे रहिबा
सरफेस सहित कांटेक्ट रहले काना हबा जे हमर फोर्स डाउनवर्ड फोर्स केते डाउनवर्ड फोर्स mg ही हबा बिकॉज़ मास इज m and we press this ground in downward direction due to the gravitational force of the earth. So instead of acceleration we can use g. So our downward force is mg, which is x towards the surface, and this surface is x equal and opposite reaction on weight. That means this reaction of the surface is said to be weight. तारना surface हमर ऊपर रिएक्शन देला परे ही हमें कहि पारमा जे हमर किछि वेट अछि आ जदि सरफेस किछि रिएक्शन नै दी त हमें का रहब वेटलेस बिकॉज़ हम जदि फ्रीली फॉलिंग करब देयर इज नो contact with the surface तो तुम फ्रीली फॉलिंग करब देयर इज नो contact with the surface then you feel you are weightless. So surface सहित तुम सब बेले कांटेक्ट रे रहइबो surface सहित तुम सब बेले कांटेक्ट रे रहिले ही तुमको वेट थिलांती लागिबो. So surface सहित सब बेले कांटेक्ट रे रहिले वेट थिलांती का जे लागुची because the surface is exerting reaction on you. तमर ऊपर surface reaction पकोचे and that reaction is feel that you have some weight. So what is the definition of weight? Weight is the weight of a body is the reaction mane rakhibo reaction of force exerted on the body by surface in contact So the weight of the body is the reaction. If there is reaction, then you feel weight. If there is no reaction, then you feel weightless. Then is देखो तमे जदी गोटे बिल्डिंग रो जदी तमे तळकु जंप करूछो इने तमर किछि रिएक्शन अछि रिएक्शन नै ना तो रिएक्शन नै ना तो तमर मास का वेटलेस एमति लागुछि किनु तमे जदी गोटे सरफेस रे स्टैंडिंग हिचो क्या उठिचो सेतली सरफेस तमर ऊपर रिएक्शन पकोछि तो रिएक्शन पकेले तमर में किछि वेट थिला एमति लागुछि. So weight is the reaction of the surface. और से सरफेस का रिएक्शन केते बेले पकाबा जेते बेले तमे सरफेस सहित कांटेक्ट रे रहिबो तो सरफेस सहित कांटेक्ट रे रहिले सरफेस किसी रिएक्शन पकोछि सो यू फील लाइक दैट यू हैव सम वेट और सरफेस बिना कांटेक्ट रे रहबो बोले सरफेस किछि रिएक्शन तमर ऊपर नै पकाबा सो इफ यू ड्यूरिंग योर फॉल यू फील दैट यू हैव वेटलेस. तो क्लियरली बुझलो सो वेट कागे को आजीबा जे वेट को आजीबा जे सरफेस ऊपर तमे रहला पर सरफेस तमर ऊपर जेते रिएक्शन पकेबा दैट रिएक्शन इज योर वेट. मन रखछ तमर तो वेट अछि तमे जेते मास द्वारा बा जेते फोर्स द्वारा तमे सरफेस ऊपर डाउनवर्ड फोर्स पकेलो सेते फोर्स ही तमर वेट हबा. सो इन दिस केस वेट इज mg. तो सिंपली मन रखछ किछि नै ना तो तमर अच्छे वेट अच्छे किंतु तमे सरफेस कांटेक्ट सहित रहिले ही तमर वेट ता जणा पड़बा और बिना सरफेस कांटेक्ट ने जदि तमे फॉल करिबो बोले तमे वेट थिले भी तमके वेटलेस एमति ही लागबो. तो मन रखिबो सरफेस कांटेक्ट रो रिएक्शन के ही को आजिबा वेट बिकॉज़ सरफेस कांटेक्ट रे थिले ही तमर वेट थिला एमति लागिबो आ तमे जदि ऊपरू केन जगह जंप करबो बोले तमर वेटलेस लागबा बिकॉज़ यू हैव नॉट कांटेक्ट इन द सरफेस with the surface. Oh. So this is weight. So we have studied in this class that apparent weight of the man in lift. तो तमे तो लिफ्ट तमे शॉपिंग गोइंग जाउथिबो बड़ बड़ मॉल मान को जाइथिबो तो सेठी तमे लिफ्ट द्वारा ऊपर को जैसो सो से लिफ्ट रे हमर apparent weight रो कंडीशन कोन हेबो सेटा हमें देखबा जे इफ द लिफ्ट moves upward direction then what is the weight of our body. If the lift moves towards the downward direction, then what is the weight of our body? As well as if the lift move with uniform velocity, and we know that uniform velocity there is no change in velocity, and if there is no change in velocity, then acceleration is 0. So if the lift
is at rest condition or move with uniform velocity, then what is the weight of our body inside the lift? That we will study. So suppose this is a lift, and suppose a man standing on the lift, and we know that this man acts a downward force mg. The man is always acts a downward force mg. मन रखिथिबो जे इतार ग्रेविटी रो काजी मैन ग्रेविटी रो काजी तल के आसबो, तल को जीवा पाई चाहबो, लिफ्ट अच्छे तो तार फोर्स तल को जीवा पाइबा, बिकॉज़ द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ. तो से रीजन रो काजी मैन ता तल को जीवा पाई चाहबो. सो मैन इज ऑलवेज एक्ट्स ए ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, और press the lift. Similarly, this lift is also acts a reaction force. अब ई एक्शन और रिएक्शन सब बेले समान हेबा बोली माने नहीं. देखो जदी लिफ्ट का फर्स्ट कंडीशन हमें देखमा, फर्स्ट कंडीशन हमें देखमा when the lift moves upward, when the lift move upward with acceleration a, with acceleration a. तो फर्स्ट कंडीशन सब द्वारा लिफ्ट का अपवर्ड डायरेक्शन जो मूव करूचे, तमने हमें ऊपर को जीवा को चाहूछु. सर शॉपिंग कर जाइतो, से शॉपिंग करछो तमर 3 नंबर 4 नंबर स्टार बिल्डिंग रे तमर किछि किनबा আছে, बोले तम लिफ्ट द्वारा तम काना करबो ऊपर के जीवो. एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ व्हिच द लिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, जे एक्सेलरेशन द्वारा कि लिफ्ट ऊपर को जाउछि. सो अबे हमें देखमा जे हमर इन वेट जे रहउछि, वेट इज ऑलवेज आर, बारंबार कहली जे सरफेस रो रिएक्शन जदी देखो बारंबार कहली जदी सरफेस रो रिएक्शन जदी हमर ऊपर पड़बा, हमें तो जानिछु सरफेस ऊपर हमें डाउनवर्ड फोर्स पकेमा, किंतु सरफेस रो रिएक्शन जदी हमर ऊपर पड़बा बला हमको वेट की लागिबो. आ बिल्डिंग रो जदी हमें डेगेबा जंप करबा, तो सरफेस रो रिएक्शन हमर ऊपर पड़बा कि नहीं, बिकॉज़ वी कैन कांटेक्ट विद द सरफेस. सो सरफेस रो रिएक्शन जदी नहीं पड़बा बला हमर वेट जीरो, और सरफेस सहित कांटेक्ट रे रहबो, એટલે सरफेस रो रिएक्शन पड़बा त हमर किछि वेट अचलती हमको लागिबो. सो देखो हमें वेट रो वैल्यू बाहर करबा, आर रो वैल्यू बाहर करबा. सो as the lift move upward direction, so we know that this reaction is upward force and our force is downward force. तो upward force और downward force भितरु केन फोर्स टा अधिक हवा जार द्वारा कि लिफ्ट ऊपर को पळेबो. रिएक्शन फोर्स अपवर्ड फोर्स अधिक है नहीं, लिफ्ट ऊपर को पळेबो. सो चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू केते r minus mg, that is upward force minus downward force. I know माइनस ही हो बिकॉज़ अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स डायरेक्शन अपोजिट होचे, माइनस ही लागबो. किंतु जेतो तमर ई रिएक्शन फोर्स अधिक रहबा, बिकॉज़ ई रिएक्शन फोर्स लिफ्ट रटा और लिफ्ट रो रिएक्शन फोर्स अधिक रहले ही तमर लिफ्ट ऊपर को जीवा. और से रिएक्शन फोर्स का हमें कहमा हमर अपरेंट वेट. सो दिस इज नेट फोर्स, and net force is equal to ma. We know that net force is equal to mass into acceleration. So instead of net force we can be used that is upward force minus downward force is equal to ma. So lastly r is equal to na plus ng, that is r is equal to na plus g. That means our downward force सहित आउ भी एमे एड होची. सो इनु जणा पड़छे हमर अपरेंट वेट टा बिकॉज़ वेट बोल तो आर कि नहीं, तापरे लिफ्ट जेते बेले ऊपर को शिफ्ट होला से टाइम रे तमर देखो आर वैल्यू टा अधिक आई गला, बिकॉज़ आर वैल्यू तमर जानिछो जेते
जेते तमर फोर्स तल को पड़ुचे सेते तमर ऊपर के पड़ुची तो r इज इक्वल टू mg हवा कथा दिस इज योर रियल वेट किंतु लिफ्ट ऊपर को जीवा पड़े तमर r इज इक्वल टू केते ma प्लस g है तो तमे देखिबो जेते बेल तमे लिफ्ट सहित ऊपर को जीवो तमर वेट ता इंक्रीज हला आंती लागिबो प्रैक्टिकली तमे रियलाइज करियो और फॉर्मूला भी जोड़ा पड़ुचे दिस फॉर्मूला इज आल्सो एक्सप्रेस देयर apparent weight is increase when the lift move upward direction so लिखि देबो so in this condition the apparent weight is increased due to the lift move upward direction so practical देखो किछ नहीं ना बहुत सहज है upward direction so upward force अधिक होला downward force कम होला और net force is equal to mass into acceleration then हमके apparent weight r वैल्यू दरकार किंतु एक्चुअली तम रियल वेट r इज इक्वल टू mg हवा कथा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ बिकॉज़ तमे जते फोर्स द्वारा तल को तमे एक्शन पकोचो ई सरफेस कांटेक्ट बा लिफ्ट सेते फोर्स द्वारा रिएक्शन पकेबा सो दैट इज द एक्चुअल वेट r इज इक्वल टू mg किंतु ई लिफ्ट ता ऊपर को जीवा कंडीशन द्वारा तमर अपारेंट वेट का चेंज होला और तमर अपारेंट वेट का चेंज होला इंक्रीज होला कि डिक्रीज होला if the lift move upward direction देखो this is very important concept which is coming every time in your exam then एमे आउरे condition देखमा when the lift moves downward direction when the lift move downward direction एबे तमे शॉपिंग कलो ऊपरू एबे तमे तळ को आसबो घर को जीवा पे धरो तमे ऊपरू लिफ्ट द्वारा तमे तळ को पळे आसलो तो लिफ्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कला तो when the lift move downward direction down with some acceleration द्वारा बे लिफ्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन को आसबा तो तमे ई डायग्राम समान ही रखिथिबो किंतु एक्सेलरेशन रो डायरेक्शन तो तळा को देबो बिकॉज़ दिस एक्सेलरेशन with which the lift moves towards the downward direction सो एबे देखो जेते बेले लिफ्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन को आसला तो डाउनवर्ड फोर्स अधिकाई जीवा so in this case we can be right that mg minus this is net change in force because downward direction की लिफ्ट आसला तो डाउनवर्ड फोर्स अधिकाई गला so mg और upward force आई गला फोर्स तो केवे भी नहीं हुई because this man produce action downward direction mg and equal and opposite the lift produce reaction in upward direction with r so इधर फोर्स माइनस ही है किंतु के कारण माइनस है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जेतु लिफ्ट आउसी तो डाउनवर्ड फोर्स अधिक आई गला किंतु फर्स्ट कंडीशन में अपवर्ड डायरेक्शन रे जाउथिला तो अपवर्ड फोर्स अधिक आथिला एबे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के आउसी तो डाउनवर्ड फोर्स को यू कैन बी कंसीडर एज डाउनवर्ड फोर्स इज हाई सो डाउनवर्ड फोर्स माइनस बाकी माइनस है भाई इनका फोर्स सब बोले एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन so in this case also we can be calculate r so if this r is leave this side then this is mg minus mg minus so r is equal to m common g minus so देखो तमे प्रैक्टिकली रियलाइज करो जे जदी तमे लिफ्ट सहित जदी तळ को आउछो ले तमर वेट इंक्रीज हला अंति लागबा कि डिक्रीज हला अंति लागबो so if you move towards downward direction and inside the leaf then your weight is decreases and this mathematical expression also represent that the apparent weight is decreases j minus अच्छी so लिखि पारबो the apparent weight is decreases due to lift move डाउनवर्ड डायरेक्शन सरला एबे जदी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन को भी जेबोनी और डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी जेबोनी सपोज द लिफ्ट इज एट रेस्ट कंडीशन
एंड ऑल्सो आम कही पार्मा लिफ्ट को रेफ्ट कंडीशन जिते बेले से मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज इफ देयर इज नो change in velocity then we can be say that acceleration is 0. That means if the lift moving with uniform velocity in upward direction otherwise downward direction or the lift is at rest condition then we can consider that acceleration is 0. So condition when the lift is at rest, when the lift is at rest or moving with uniform velocity, then we can be right that acceleration of lift is 0. तमने लिफ्ट ऊपर के जो थिला फर्स्ट कंडीशन तल को जो थिला सेकंड कंडीशन एबे थर्ड कंडीशन में सपोज दैट लिफ्ट इज एट रेस्ट कंडीशन देन वी कैन यूज दैट एक्सेलरेशन इज 0. देन तमे एमटी भी भाबी पारबो एक्सेलरेशन को 0 if the lift move with uniform velocity because there is no change in velocity then there is no acceleration. So we can be right this is mg minus downward force minus upward force and also you can be right that upward force minus downward force. If the lift moving upward direction then we can be right r minus mg and if the lift moving downward direction move करू downward force अधिक होगा then you can write mg minus r. But the lift moving with the lift moving with uniform velocity or the rest condition so that you can consider its acceleration is 0. So first, so you may be write mg minus r or r minus mg. But the net change in force is m and we know that the lift is at rest condition. So instead of a we can be write 0 into m is 0. That means mg is equal to r. In तमर actual weight का apparent weight संगे समान. तो actual weight और apparent weight भीतर difference का. Actual weight में बारंबार कहते हैं r is equal to mg actual weight. तापर तमें ऊपर को जीवो लिफ्ट सहित कि तल को जीवो कि रेस्ट कंडीशन में रहबो बोले जे weight ता तुम चेंज होचे that weight is considered as apparent weight. जे जिनिस म आगर कहबा कथा तो टिके बुझी दियो जे अपारेंट वेट और एक्चुअल वेट भीतर डिफरेंस काना जे एक्चुअल वेट तो बुझे थिली मुई जे जते एक्शन द्वारा से तल को दामा फोर्स पकोछि एमजी पकेबा सेति लिफ्ट बा सरफेस का ऊपर फोर्स पकेबा और दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ द मैन because we know that the reaction of the surface contact is considered as weight. If there is no reaction then we have massless, weightless. So the reaction is considered as weight. This is actual weight. But if the lift move at upward direction, downward direction is rest condition, then what is the change in weight of the man? And that weight is apparent weight. So in this case, actual weight and the lift is at rest condition, so apparent weight is set. So in this case we can be right that the actual weight of the man, the actual weight of the man is equal to its apparent weight. Due to the lift is at rest or moving with uniform velocity. Clearly बुझलो. So इरा होचे तीनटा कंडीशन और कंडीशन होचे हम नेक्स्ट क्लास पढ़मा आज एते थाओ. Thank you.